गुड इवनिंग टू ऑल. गुड इवनिंग टू ऑल. सो आज का जो सेशन है दैट इज टाइम एंड वर्क पार्ट 2. पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ बेसिक बातें करी थी कि टाइम एंड वर्क के कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको हमने डिस्कस करा था. आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे. अगेन कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैन डेज पे एंड पाइप एंड सिस्टम. तो ये दो कॉन्सेप्ट बेसिकली आज हम टेस्ट करेंगे. So before I should start with the session, I request you all that please share this session in your groups. Okay, I'm starting with the session. सबसे पहले concept of man days. Man days का basically concept है क्या? If I talk about man days, what is this concept? समझते हैं इसको. अभी concept basically क्या है कि suppose if I say कुछ काम है, there is some work which is to be done by somebody. तो वो जो वर्क है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं मैन डेज. एक यूनिट हमने ली मैन डेज. मैन बेसिकली जो भी लेबर है, डेज जो भी टाइम की यूनिट. तो मैन जो भी लेबर है, जो भी काम कर रहा है, डेज जो भी टाइम की यूनिट. सो सपोज इफ आई से कि कोई बिल्डिंग को पेंट कराना, कोई बिल्डिंग को पेंट कराना. सो बिल्डिंग को पेंट जब कराना है, सपोज इफ आई से 20 men आर रिक्वायर्ड एंड दे कैन पेंट दैट बिल्डिंग इन 18 days. सो हम ये बोलते हैं कि जो वर्क है बेसिकली that is what 20 men into 18 days, that is 360 man days. So basically जो वो वर्क है that is 360 man days. Is it clear to all? जैसे अभी आप सबने देखा होगा, सबने तो नहीं, बेसिकली मैं बोलूंगा कि आप कभी कभी देखते हो ना कि कोई ड्रेस बनी है और उसमें लिखा आता है कि 1400 आवर्स लगे हैं उसको बनाने में, यानी कि 1400 मैन आवर्स. अब वो मैन काम करे, वुमेन काम करे, जो भी काम करे, 1400 आवर्स यूज करे हुए. मे बी 140 आवर्स एक वर्कर ने लगाया, बट 10 वर्कर्स हैव वर्कड ऑन दैट ड्रेस. सो दैट इज 1400 आवर्स. इज इट ओके टू ऑल? तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आपको पता है द नंबर ऑफ मैन विल बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद द वर्क. मैन और वर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है. But man or days, more the man, less the number of days would be there. So man और days inverse proportion में होगा. और आपने पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो ये रेशियोज कांस्टेंट होती है, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है. तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है m1 d1 h1 by w1 is equal to m2 d2 h2 by w2. कभी भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. M1 M2 denote man, D1 D2 denote days, H1 H2 denote hours, W1 W2 denote work. So M1 D1 H1 by W1 is equal to M2 D2 H2 by W2. So this is a formula which you should know when you solve these kind of questions. Suppose this is the question. 12 men can do a piece of work in 30 days. Then find 18 men can do the same piece of work in how many days? तो आप सिंपल लिखोगे 12 men in 30 days is equal to how many men are working? 18 men. In how many days? This you have to calculate. From here you will get the value of D as 20. So they will take 20 days to complete the work. Is it clear to all? Any doubt to anyone in this? किसी को कोई doubt? Okay. Now moving to the next question. Please all of you see this question. I'm giving you 45 seconds for this question. All of you try this and then I will be discussing. Now see what is given in this question. There is sufficient food for 400 men for 31 days. After 28 days, it means they have consumed the food for 28 days. Who consumed? 400 men. I've consumed for 28 days. 31 days के लिए food available था, उन्होंने 28 days consume कर लिया. So जो food बचा था वो 3 days का बचा था. 400 men का 3 days का food बचा था. Now after 28 days, 280 men left the place. How many men are left? 120 men are left. Now the question is, for how many days will the rest of the food will last for rest of the men? Into DD. So we have to find the value of days. So 400 men का food 31 days का था, 28 days उन्होंने consume कर लिया. So food is left for 3 days. Now 280 men left the place. How many men are left? 120. So the food will last for D2 days. यहाँ से solve कर, 0 0 cancel.
3 से कैंसिल, 4 से कैंसिल, सो D2 इज 10 days। तो ये जो खाना है ये 10 दिन तक चले, आंसर इज 10 days, आंसर इज 10 days। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, सिंपल कॉन्सेप्ट M1 D1 H1 by W1 is equal to M2 D2 H2 by W2। Now see this question, a very good question. I'm giving you 1 minute for this question. All of you try this, 1 minute for this question. All of you try, by the time I'm just writing that out. Now see what is given in this question. 40 men can do a piece of work in 40 days. Let one man can do 1 unit per day. So 40 men can do how many units in 40 days? One man will do 1 unit in 1 day. So in 40 days, one man will do 40 units. So 40 men will do 1600 units. So total work is 1600. Total work is 1600. Okay. So 40 men can do 40 units per day. So in 40 days, they will do 1600 units. They started the work together, but at the end of every 10th day, 5 men left the work. तो देखो पहले 10 दिन तक काम हो, सो एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट करेगा, तो 40 मैन ने 10 दिन में कितना करेगा? 400। उसके बाद 10 दिन बाद 5 आदमियों ने काम छोड़ दिया, तो 35 मैन रह गए, उन्होंने 10 दिन में कितना करा? 350। फिर 30 मैन रह गए, 10 दिन में कितना करा? 300। फिर कितने मैन रह गए? 25। 10 दिन में कितना करा? 250। फिर कितने मैन रह गए? 20। 10 दिन में कितना करा? 200। तो 50 दिन में उन्होंने जो टोटल काम कर लिया, दैट इज 1500 यूनिट्स। टोटल काम था 1600 यूनिट। लास्ट में 20 आदमियों ने 10 दिन तक काम करा, 20 आदमियों ने 10 दिन तक काम करा। इसके बाद 5 आदमियों ने और छोड़ दिया, तो 15 मेन रह गए। वर्क कंप्लीटेड इज 1500 यूनिट्स, टोटल वर्क था 1600, सो 100 यूनिट इज लेफ्ट। और लोग हैं 15, एक आदमी एक करेगा तो 15 आदमी 15 करेंगे, तो इसको करने में कितना टाइम लगेगा? 20/3 डेज, यानी कि 20/3 डेज। इसका मतलब 20/3 क्या होता है? 6/2/3 डेज, 6/2/3 डेज। तो 50 डेज पहले लग चुके थे, 6/2/3 डेज और लगेंगे, तो टोटल है 56/2/3 डेज। गरिमा चेक करो कुछ गलती करिए, आंसर है 56/2/3 डेज। आंसर है 56/2/3 डेज। प्लीज ऑल ऑफ यू चेक दिस, अ वेरी गुड क्वेश्चन। आंसर फॉर दिस इज 56/2/3 डेज। Now, see the next question. अब ये क्वेश्चन आपको समझाता हूं। देखो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डिग अ कैनाल 12 किलोमीटर लॉन्ग, यानी कि उसे कैनाल बनाना विच इज 12 किलोमीटर लॉन्ग, which is to be completed in 350 days. He employs 45 men. After 200 days, he finds that only 4.5 kilometer of the canal has been done. Find the number of extra men he must employ to finish the work on time. ठीक है, यानी कि उन्हें 12 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल बनाना 350 डेज में, और मेन कितने? 45। ठीक है, ये डाटा अवेलेबल है हमारे पास। अब बोला ये गया कि आफ्टर 200 डेज कुछ हुआ, कितना काम हुआ? 4.5 किलोमीटर ऑफ द कैनाल हैज बीन डन। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, तो जो ये आपको फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 बाय W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बाय W2, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर देखो वो वैल्यू पुट करते हैं जो काम एक्चुअल में हुआ, और यहां पर वो वैल्यू जो बच गया। तो देखो हाउ मेनी मेन वर देयर, हाउ मेनी मेन वर देयर? 45। कितने दिन काम किया था उन्होंने? 200 डेज। H1 है ही नहीं क्वेश्चन में, आर्स है ही नहीं। क्या काम करा था? 4.5 किलोमीटर कैनाल बना, तो ये लेफ्ट साइड पे लिख, इज इक्वल टू व्हाट इज द वर्क लेफ्ट? टोटल 12 किलोमीटर बनाना था, उसमें से 4.5 बना लिया, तो कितना रह गया? 7.5। लेट M2 मेन वर दे, और कितने दिन काम करा?
टोटल 350 डेज से 200 डेज वो काम कर चुके थे, बचा क्या था 150 डेज। बस इसको सॉल्व कर, दिस इज 20, दिस इज 10, दिस इज 10, M2 is 100, M2 is 100, so total 100 मेंस आर। अब 45 तो पहले थे, तो एक्स्ट्रा कितने चाहिए, एक्स्ट्रा कितने चाहिए, एक्स्ट्रा कितने चाहिए 50, so extra men required as 50। is it okay to all? Extra men required as 55, extra men required as 55। किसी को कोई डाउट यहां तक? Please all of you check this. Nitesh, Garima, is it clear? Anupam, okay. Now, all of you just read this question and try to do this. Okay, then I will tell you two different approaches to solve this question. Then it is your call. You want to do this question by which approach? Although I will tell you which is a better way to do this. But first you try this question. All of you try this. I'm giving you 90 seconds for all these three parts. Please try. At that time, I'm just writing the data and you try the question. See this question. Whenever you get a information like this, 2 men and 3 women can do a piece of work in 8 days. 3 men and 2 women can do the same piece of work in 7 days. So there are two approaches. The first approach जो अभी आज हमने पढ़ा, क्या हमने पढ़ा कि जो भी काम करे, कौन काम करे, 2 men and 3 women, जो भी काम करे इनटू जो भी टाइम है इज इक्वल टू 3 men and 2 women इनटू 7। यहां से सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, we will find the relationship between the efficiency of a man and a woman। यहां से 16 m आएगा, यहां से 21 m, तो एक साइड पे 5 m, यहां पर 24 w, यहां पर 14 w, दैट इज 10 w। तो यहां से m और w की रेशियो आ गई, दैट इज 10:5, विच इज 2:1। इससे ये पता चल गया द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अ मैन एंड अ वुमन इज 2:1। इट मींस अ मैन डज twice as much work as a woman does। Is it clear to all? जब आपके पास m और w की रेशियो आ गई, what would be your next step? Your next step would be, या तो आप वैल्यू यहां पर पुट कर दो m और w, या तो आप वैल्यू यहां पर पुट कर दो, वहां से आपके पास टोटल वर्क है। So how to calculate the total work? Replace the values of m and w। अगर मैं m की जगह 2 रख दूं, w की जगह 1, 2 2s are 4 plus 3 7, 7 into 8 is 56। So the total work is 56 units। Now the first part is 4 men can do the same work in how many days? One man is doing 2 units, so 4 men will do 8 units, and total work is 56। So how many days they will take? 7 days। So answer for first part is 7 days। Second part, 7 women will do it in how many days? 1 woman will do 1 unit, so 7 women will do 7 units. So to do 56, they will take 8 days। Now 5 men and 4 women, 5 men will do 10 units, 4 women will do 4 units, total is 14। So to complete 56, how many days they will take? 4 days। Please all of you check this. This is approach number 1. Then I will tell you approach number 2 also, and you will tell me which is a better approach। This is approach number 1। Is it okay, Nitesh, Garima, Anupama, Kartike? Is it okay? Now see the second approach for this question.
It was given 2 men and 3 women can do a piece of work in 8 days, whereas 3 men and 2 women can do it in 7 days. So आपको याद होगा जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि A can do a piece of work in 8 days, B can do it in 7 days. तो हम क्या करते थे, हम वर्क को एज्यूम करते थे, लेट वर्क इज एलसीएम ऑफ 8 and 7. तो हमने वर्क को एज्यूम कर लिया 56 यूनिट, क्योंकि बोला गया 2 men and 3 women does in 8 days, 3 men and 2 women does in 7 days. तो हमने काम को माना 8 और 7 का एलसीएम विच इज 56. So let total work is 56. So 2 men and 3 women will do 56 units in 8 days. So in 1 day they will do 7. In 1 day they will do 7 units. 3 men and 2 women. 3 men and 2 women will do 56 in 7 days. In 1 day they will do 8 units. So 2 equations, 2 variables. यहाँ से आप m और w की वैल्यू निकालो. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू 2 आएगी, w की वैल्यू 1 आएगी. It means man does 2 units per day, woman does 1 unit per day. Man does 2 units per day, woman does 1 unit per day. Now 4 men will do it in how many days? 1 man will do 2 units, so 4 men will do 8 units. So they will take 7 days. Now 7 women will take how many days? 1 woman will do 1 unit. So 7 women will do 7 units. So total days would be 8 days. 5 men and 4 women can do the same work in how many days? So in 1 day they will be doing 14 units. So to do 56 they will take 4 days. Is it okay to all? Is it okay to all? Any doubt? Any doubt to anyone in this? Any doubt to anyone in this? Please tell me, is it clear to all? Now tell me which approach is a better approach. First approach or second approach? Which approach is a better approach? Now please note down one thing which I want to share here is, if there are two variables, man and woman, then I would suggest go with first approach. First would be better. Just find the relationship between man and woman efficiency and you can solve. If there are 3 variables, that is man, woman and children, then go with the second approach. Is it okay to all? Otherwise you can try with both the approaches, but I am telling you, if there are 2 variables, go with the first approach. If there are 3 variables, go with the second approach. Is it okay? Anupama, Garima, Karthike, Nitesh, is it okay? I will give you a question on this. Okay. But before that, I just want to tell you one more concept. Suppose if I say 5 men and 12 women can do a piece of work in 20 days. Now tell me, if I ask you 4 men and 7 women will do it in how many days? What would be the answer for this question? What would be the answer for this question? Please tell me. What would be the answer for this question? 5 men and 12 women can do it in 20 days. 4 men and 7 women can do it in how many days? Tell me the answer. Answer for this is can't be determined, because there is no relationship between the efficiency of a man and a woman. The answer is can't be determined. Because in our questions, there is an assumption that all men have same efficiency, all women have same efficiency. But the efficiency of a man and a woman are different. Now tell me, what would be the answer for this? Suppose if I say 8 men and 12 women can do a piece of work in 60 days. Now 6 men and 9 women will do it in how many days? Please tell me, what would be the answer? What would be the answer? Anupama, Garima, Karthike, please give your answers here for this question. 8 men and 12 women can do it in 60 days. 6 men and 9 women can do it in how many days? Now many students say answer for this is cannot be determined. That is wrong. Here see the ratio 8 and 6. The ratio is 4:3. What is the ratio here? 4:3. If this ratio matches, then you can solve. You can directly say answer would be 60 into 4 by 3, which is 80 days. Please note down this. This is very important. If this ratio matches, then you can solve. You can directly multiply this number by 4 by 3 and you will get your answer. Remember, 60 is wrong. Answer is 80. 60 into 4 by 3. If this ratio matches, then you can solve.
Is it okay? Any doubt to anyone in this? I'm giving you a question based on this concept. Let's see how many of you can solve this. Try this. All of you try this. I'm giving you 90 seconds for this question. At the time I'm just writing the data, please try. All of you try this. Now what is given? 6 men and 8 women can do it in 10 days, whereas 26 men and 48 women can do it in 2 days. 15 men and 20 women can do it in how many days? This is the question. Now see, there is no use of this data. No use. You can solve the question only by using this data. No use of this. See how. If you look at this, 6 and 15, what is the ratio? 2 by 5. What is the ratio of 8 and 20? 2 by 5. So simply multiply 10 by 2 by 5. You will get your answer. 10 into 2 by 5 is what? 4 days. Answer for this question is 4 days. Is it clear to all? And please tell me, how is the approach for this question? How is the approach? Very good, Rahul. Very good, Anupam. Very good, Kailash. S group. Very good. Is it clear to all? Any doubt? Now try this. A very good question. I'm giving you 2 minutes for this question. Try this. 2 minutes for this question. All of you try this. Slightly difficult question with respect to previous question, but please try this. All of you try. By the time I'm just writing that out, all of you try this. Now in this question, what is given? 3 women and 2 men can do a piece of work in 6 days, whereas the same work when done by 3 men, they will take 5 days less than 9 women. So the question is, how many times does the output of a man exceeds than that of a woman? This is the question. A very good question. Slightly difficult than previous question, but a very good question. Now basically इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है, the output of a man exceeds than that of a woman by what number? So basically मुझे man और woman की efficiency की ratio चाहिए. So let I assume woman does 1 unit per day or man does k units per day. Woman does 1 unit, man does k units. Now see, so the total work. What would be the total work? Let's see. Woman will do 3 units, 3 into 1, 3 plus 2k. 3 plus 2k into 6. So I can say that the total work is 3 plus 2k into 6. This is the total. Now if this work is done by 3 men, how many days they will take? This is the total work which is done by 3 men. 1 man will do k units, so 3 men will do 3k.
So this is the number of days taken by 3 men. Now 9 women will take how many days for this? The total work is this. 9 women will do 9 minutes. So the time taken would be this. The difference between both the time is 5 days. It is given to you in the. Now see. 2k plus 3 is common in both. In the denominator, if I see 3 is common, or if I solve this like this, just see. If I solve it like this, cancel by 3, this is 2, cancel by 3, basically this is 3. Why I am doing this? Because here 3 is there, here 3 is. So I take 2k plus 3 common, 3 is common. What is left here? 2 minus 3 plus 2k is taken, 3 is taken. So 6y is equal to what? 5. So this is 2k plus 3 by 3 into, if I take the LCM, this is 2k minus 6 by k is equal to 5. After this, I'm just doing cross multiplication, I'm writing here. That would be 4k square. 2k into 2k, 4k square minus 12k plus 6k minus 6k minus 18 is equal to 15k. So 4k square minus 21k minus 18. So there will be two values of k. One would be 6 and one would be minus 3. Negative is not possible. K is 6. So the efficiency of a man is 6 times than that of a woman. The efficiency of a man is 6 times than that of a woman. But what they have asked, please focus on that. They are asking how many times does the output of a man is more than that of a woman. If woman does 1 unit, man does 6 units. So how many times more? Answer is 5 times. Answer is 5 times. Patrix, please check. You made the mistake in just the last step. Answer is 5 times. If the question was the efficiency of a man is how many times than that times of a woman, then answer is 6 times. But here the question is how many times does the output of a man exceeds than that of a woman? So answer is 5 times. Please all of you check. Anupama, Garima, Kartike, Patrix, Kailash, Rahul. Please all of you check this. How was the question? Now try this. Now all of you try this. Now there are 3 variables. I told you what to do in 3 variables. Okay. I told you what to do in 3 variables. All of you try this. Again, I am giving you 2 minutes for this question. Okay. 2 minutes for this question. All of you try. By the time I am just writing that out. Now see this question. 1 man, 3 women and 4 boys can do a piece of work in 96 hours. 2 men and 3 women can do it in 120 hours. 2 men and 8 boys can do it in 80 hours. Now 5 men and 12 boys can do it in how many hours? So first step is consider work to be LCM of these 3 numbers. So let work is LCM of these 3 numbers, 96, 120 and 80. That is 480.
So let the work is 480 units. So 1 man, 3 women and 4 boys will do how many units? In 96 hours they are doing 480. So in 1 hour they will be doing 5 units. Now 2 men and 3 women will do how many units in 1 hour? In 120 hours they are doing 480. So in 1 hour they will do 4 units. 2 men and 8 boys will do 480 units in 80 hours. So in 1 hour they will do 6 units. So 3 equations, 3 variables. 3 equations, 3 variables. Okay. Now from here you have to solve the value of M, W and B. M, W and B. Now how to solve this? I want M and B anyhow. Now see, if I divide this equation by 2, I will get the value of M plus 4. I will get the value of M plus 4. That is what? 3. Replace this value here. M plus 4B as 3. What you will get? 3W as 2. If you got 3W as 2, just put it here. If 3W is 2, 2M would be 2. And if 2M is 2, 2M is 2. I put the value here. I will get the value of B as half. B is half, M is 1. B is half, M is 1. If B is half, M is 1. Now the question is 5 men and 8 boys. 5 men will do 5 units because 1 man will do 1 unit. And 12 boys will do 6 units. So total is 11 units. You have to do 480. In 1 hour they are doing 11 units. How many hours they will take? 43, 7 by 11. 43, 7 by 11. Answer is B option. Answer is B option. Answer for this is B option. 43, 7 by 11. Any doubt to anyone in this? Answer for this is B option. 43, 7 by 11. Now try this. Again, a very, very good question. Slightly tougher than your NMAT exam, but a very good question which can be asked in CAT exam also. A difficult question with respect to NMAT, OMIT exams, but a very good question. Please all of you try this. Think on this. A very good question. I'm giving you 2 minutes for this question. Please think on this question. A very, very good question. Now see what is given in this question. Rakesh can do a piece of work in 9 days. Govind take 3 days to complete the work. Rakesh and Govind work on the job on alternate days. If they take exactly the same time, irrespective of who starts it, अब ये कहना चाह रहा है काम कोई भी शुरू करे टाइम सेम लगता है. So how many positive integral values of dr? Now please think on this. 2 केसेस पॉसिबल. केस वन में क्या हुआ? पहले राकेश ने काम करा, फिर गोविंद ने करा, फिर राकेश ने करा, फिर गोविंद ने करा. और यहां पर ऐसा हो रहा, गोविंद ने करा, राकेश ने करा, गोविंद ने करा, राकेश ने करा. यानी कि ये साइकिल्स राकेश गोविंद या गोविंद राकेश कंप्लीट हुई होंगी. तो फर्क ही नहीं पड़ा होगा किसने स्टार्ट करा. बिकॉज अगर मैं बोलूं काम 10 डेज में खत्म तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि 5 टाइम्स राकेश की बारी आएगी, 5 टाइम्स गोविंद की बारी आएगी. सो देयर विल बी नो डिफरेंस. केस टू क्या होगा? राकेश ने शुरू करा, गोविंद ने करा,
फिर राकेश ने सपोज कुछ टाइम काम किया, कुछ टाइम, कोई भी फ्रैक्शन हो सकता, गोविंद ने करा, राकेश ने करा, और फिर गोविंद ने करा कुछ टाइम। अब देखो इन दोनों दिन का काम तो सेम है, अगर इन दोनों को सेम होना है तो वो तभी हो पाएगा जब राकेश और गोविंद की एफिशिएंसी सेम है। तो ये तो बहुत आसान है, अगर राकेश 9 डेज ले रहे तो गोविंद भी अगर 9 डेज ले ले, सो दिस इज पॉसिबल। तो एक वैल्यू तो डी की 9 क्योंकि इजीली मिल गई। इज इट क्लियर? एक वैल्यू तो डी की इजीली मिल गई, दैट इज 9, क्योंकि अगर राकेश भी 9 डेज में करता है और गोविंद भी 9 डेज में करता है, सो दैट वुड बी सेम। अब इस वाले केस में क्या होगा, जब साइकिल्स कंप्लीट है, यानी कि मान लो पहले दिन राकेश आया, उसने कितना काम करा, लेट वर्क इज 1 यूनिट, मान लेते हैं वर्क इज 1 यूनिट, तो राकेश ने पहले दिन आके करा 1/9। अगले दिन गोविंद आया, उसने कितना करा 1/d। और मान लो ऐसे n साइकिल्स, हमें नहीं पता कितनी साइकिल्स है, मान लिया n साइकिल्स, सो इसका n टाइम्स इज इक्वल टू टोटल वर्क। यहां से मैं बोल सकता हूं 1/9 प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/n। यहां से मैं अगर 1/d की वैल्यू निकाल, दैट वुड बी 1/n माइनस 1/9। तो d की वैल्यू अगर यहां से आप देखोगे, d की वैल्यू जब आप d की वैल्यू सॉल्व करोगे, दैट इज 9n ओवर 9 माइनस। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब ये d की वैल्यू आ गई। अब इसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से लिख रहा हूं, बिकॉज आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d एक इंटीजर, d एक इंटीजर, ठीक है। अब ऐसे भी देख सकते हो, d एक इंटीजर है, अब मेरे को d इंटीजर चाहिए, सो 9 माइनस n, n से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है n की वैल्यू 1 2 3 4, क्योंकि साइकिल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर 0, तो 8 पॉसिबल वैल्यूज है n की। उन 8 पॉसिबल वैल्यूज में से कुछ वैल्यूज होंगे, देखो जब n 1 होगा, जब n 1 होगा तो ये 8 बन जाएगा, 8 बन जाएगा। बट 9 इंटू 1, 9/8 इंटीजर नहीं होता, तो 1 नहीं ले सकते। तो यू हैव टू जस्ट चेक 8 वैल्यूज, ठीक है। आपको देखना कौन सी 8 वैल्यूज में पॉसिबल। अच्छा अब देखो, जब n 2 होगा तो नीचे 7 बनेगा, कैंसिल ही नहीं होगा। n 3 होगा तो ये 6 बन जाएगा, और 9 इंटू 3 कैंसिल नहीं होगा। जब n 4 होगा तब भी कैंसिल नहीं होगा, जब n 5 होगा तब भी कैंसिल नहीं होगा, जब n 6 होगा तब कैंसिल हो जाएगा। तो एक वैल्यू है जब n 6 होगा, तो 9 6 54/3, तो d की वैल्यू 18 आ जाएगी। जब n 7 होगा, 7 होगा तो कैंसिल नहीं होगा, 8 होगा तो कैंसिल, जब n 8 होगा तो दैट वुड बी 72/1, सो d की वैल्यू 70। तो d की एक वैल्यू 72 है, d की एक वैल्यू 18 है, d की एक वैल्यू नहीं, आंसर इज 3 वैल्यूज। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। प्लीज टेल मी हाउ वाज द क्वेश्चन। ये समझ आ गया सबको? राहुल, गरिमा, पैट्रिक्स, अनुपमा, अमन, प्लीज टेल मी इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम, देखो बहुत सारे लोगों को लगता है पाइप एंड सिस्टम कुछ अलग टॉपिक, कुछ अलग टॉपिक नहीं। द ओनली डिफरेंस इज व्हेन आई से पाइप ए विल फिल अ टैंक इन 10 hours, पाइप बी विल एम्प्टी द टैंक इन 15 hours। तो जो फिल कर रही है उसको हम पॉजिटिव वर्क ले लेते हैं, और जो एम्प्टी कर रही है उसको हम नेगेटिव वर्क ले लेते हैं, दैट्स इट। हम वैसे ही प्रोसीड करेंगे। लेट वर्क इज एलसीएम ऑफ 10 15, आप लेते थे 10 और 15 का एलसीएम, दैट इज व्हाट 30। तो यहां पे हम टैंक की कैपेसिटी को 30 मान लें, टैंक की कैपेसिटी को 30 मान लेंगे और वैसे ही प्रोसीड करेंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। प्लीज ऑल ऑफ यू जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू ट्राई दिस क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहले इजी से स्टार्ट करते हैं। Pipe A can fill a tank in 20 hours. Pipe A can fill a tank in 20 hours. But there is a leakage. Let B is the leakage. B एक लीकेज है तो ये एम्प्टी कर रही है टैंक को, दोनों मिलकर टैंक को 28 आवर्स में फिल कर देते हैं। तो क्वेश्चन है इन हाउ मेनी आवर्स लीकेज अलोन कैन एम्प्टी द टैंक, दिस इज द क्वेश्चन। तो अब क्या करते थे, सबसे पहले से एलसीएम ऑफ 20 एंड 28, LCM of 20 and 28 is 140. Let the capacity of the tank is 140 liters. So जो 20 hours में 140 फिल करेगा वो 1 hour में 7 लीटर फिल करेगा। जो 28 hours में 140 लीटर्स एम्प्टी करेगा सो वो 1 hour में 5 लीटर्स एम्प्टी करेगा। Is it clear? So एक 7 लीटर्स फिल कर रहा है, दूसरा 5 लीटर्स एम्प्टी कर, दोनों मिलकर 2 लीटर्स फिल करेंगे। So to fill 140 they will take how many hours? 70 hours. Answer is 70 hours. Please tell me, is it clear to all? Any doubt? Any doubt to anyone in this? किसी को कोई डाउट?
Any doubt to anyone in this? Is it okay to all? Please reply, then only I will move to the next question. Try this question. I'm giving you 90 seconds for this question. Try this. All of you try this by the time I'm just writing the data. Now see, the first step is I will assume the capacity of the tank to be LCM of 12, 15 and 10. Why I'm taking this? Because A can fill the tank in 12 hours, B can fill the tank in 15 hours, and all three together can fill the tank in 10 hours. So LCM of 12, 15 and 10, that is 60. I'm assuming the capacity of the tank to be 60x liters. Why I'm taking 60x? Because we have to find the capacity of the tank. सो जो पाइप ए है 12 आवर्स में 60x फिल करता है तो 1 आवर में कितना फिल करेगा 5x. पाइप बी 15 आवर्स में 60x फिल करता है तो 1 आवर में कितना फिल करेगा 4x. पाइप सी 1 मिनट में 7.5 लीटर्स एम्प्टी करता है तो 1 आवर में कितना एम्प्टी करेगा 450. तीनों मिलकर 10 आवर्स में 60x फिल करते हैं तो 1 आवर में कितना फिल करेंगे 6x. नाउ सी ए 1 घंटे में 5x भरता है, बी 1 घंटे में 4x भरता है, सी 1 घंटे में 450 एम्प्टी करता है और तीनों मिलकर कितना भरते हैं 6x. यही तो है. अब यहां से मैं बोल सकता हूं कि 3x इज इक्वल टू 450. 3x इज 450. तो 3x की वैल्यू 450, बट हमें तो क्वेश्चन में 60x की वैल्यू चाहिए. तो मल्टीप्लाई बाय 20. मल्टीप्लाई बाय 20, आंसर इज 9000 liters. So the capacity of the tank is 9000 liters. This is the answer. The capacity of the tank is 9000 liters. Any doubt to anyone in this? So the capacity of the tank is 9000 liters. Try this question. All of you try this. All of you try by the time I'm just writing the data. Now see what is given. Pipe A can fill a tank in 20 hours. Pipe B can fill the same tank in 30.
both the pipes are open to fill the tank. But when 1/3 of the tank is full, a leak developed in the bottom of the tank, through which 1/3 of the water supply by both the pipes leak out. Then in how much time the tank will be filled? Now, first I will tell you the basic approach which majority student does. Then I will tell you a very logical approach. See, what is LCM of 20 and 30? That is 60. So let the capacity of the tank is 60. So pipe A will fill 3 liters per hour, pipe B will fill 2 liters per hour. Together they are filling 5 liters per hour. So to fill 1/3 of the tank, that is 20, and they are filling 5 liters per hour. So they will take 4 hours. तो पहले उन्होंने 4 hours तक फिल करा. उसके बाद हुआ क्या? टैंक में लीकेज डेवलप हो गई, जिसके से 1/3 एम्प्टी हो रहा है. दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं? 5. और 5/3 लीकेज एम्प्टी करी. इफेक्टिवली कितना फिल हो रहा है? 10/3. 10/3 लीटर्स पर. You have to fill 40 liters जो रिमेनिंग है, और स्पीड है 10/3. If you solve this, you will get 12 hours. So 12 hours ये, 4 hours ये, total कितना होगा? 16. So the correct answer is 16 hours. 16 hours. Very good, Anupama. Aman, your answer is wrong. Please check. Answer is 16 hours. 4 hours initially, 12 hours ये, total कितना होगा? 16 hours. Is it okay? Now see the second approach. ये आप सबको पता था कि पूरा टैंक फिल करने में 12 आवर्स लगते. मान लो अगर मैं बोलता पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 20 आवर्स, पाइप बी कैन फिल द टैंक इन 30 आवर्स, टुगेदर दे कैन फिल द होल टैंक इन हाउ मेनी आवर्स? 12 आवर्स. सो अगर 12 आवर्स में पूरा टैंक भरता है तो 1/3 टैंक कितने में भरता? 1/3 ऑफ 12, दैट इज 4 आवर्स. 4 घंटे में तो 1/3 टैंक भर गया. अब बचा कितने घंटे का काम था? 8 आवर्स का काम बचा. बट आपको समझना क्या है, जो 8 आवर्स का काम बचा है, अब बोला है क्या कि एक लीकेज डेवलप हो गया, दोनों मिलकर जितना फिल करे, लीकेज उसका 1/3 एम्प्टी करिए. सो अगर वो मिलकर 1 यूनिट फिल करें तो लीकेज 1/3 एम्प्टी करिए, तो इफेक्टिवली दे आर फिलिंग 2/3. जब स्पीड 2/3 हो गई है तो टाइम 3/2. स्पीड 2/3 हो गई तो टाइम 3/2. इफ यू सॉल्व दिस, दे विल टेक अनदर 12 आवर्स. 12 hours plus 4 hours. Answer is 16. Is it clear to all? Yes, Anupama, that is a right approach which you have done. Is it clear to all? यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? Try this question. Try this question. There is a doubt, always write doubt. Don't write yes, no. Okay. और जो भी डाउट हो वो लिख दिया करो. I will check your comment and I will revert. Okay. करो अब इसको try. So this is the last question of today's session. All of you try this. All of you try. I am just writing the data by the time. Now in the question it is given that there are some inlet taps, there are some outlet taps. Total there are 12 taps. Inlet tap can fill a tank in 6 hours, outlet tap can empty the tank in 12 hours. If all the taps are operating simultaneously, they can fill the tank in 4 hours. So let the capacity of the tank is LCM of 6, 12 and 4, that is 12. Let the capacity of the tank is 12 liters. So each inlet tap can fill 2 liters per hour. Each outlet tap can empty 1 liter per hour. And all the pipes together can fill 3 liters per hour. This is the data which I got. Let the inlet taps are X. Inlet taps are X. So outlet would be 12 minus X. Each inlet tap will fill 2 liters per hour. And each outlet tap can empty 1 liter per hour. So minus 1 into this is equal. All the taps together are filling 3 liters per hour. So from here I can say that 3x is equal to 50. So the value of X is 5. So number of inlet taps are 5. Yes, Aman, your answer is correct. Answer is 5. Any doubt to anyone in this?
So we have completed time and work. And please, जिन्होंने पिछले सेशंस नहीं देखे अभी तक, आप जाके पिछले सेशन देख सकते हो. We have completed all topics of arithmetic except time speed distance, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे. तो नेक्स्ट क्लास वुड बी ऑन आई थिंक थर्सडे आई थिंक ऑफ है 2 अक्टूबर के चक्कर में. ठीक है. सो 4 अक्टूबर को हमारी क्लास होगी, तब हम करेंगे. ठीक है, 4 अक्टूबर. तो वहां पर हम शुरू करेंगे टीएसडी. तब तक आप पिछली वीडियोस को कवर अप कर सकते हो, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स शॉर्ट में कंप्लीट हो जाए. ठीक है. और if you want to join our paid batch, then you can join our paid batch. The fees for the paid batch is 6299, जहां पर 25 NMAT 25 SNAP mocks, 15 NMAT mocks, 20 Maharashtra CET mocks, 10 CMAT mocks are there. यानी में वो प्रैक्टिस से टाइम कम होगा, उसमें टाइम सेव करना पड़ेगा. कुछ कैलकुलेशन स्पीड होती है और कुछ है द वे यू सॉल्व द क्वेश्चन अप्रोच इज इंपॉर्टेंट. और प्रैक्टिस जितनी करोगे इट विल हेल्प यू अ लॉट. ठीक है. So if you want to go for NMAT, SNAP, Maharashtra CET, CMAT, all course, complete course with these mocks, the fees is 6299. If you want to go for NMAT and SNAP, the fees is 3999. Okay, so this is all for this session. अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहा तो कर लो, so that you get notification for all the upcoming session. Thank you to all.